Let's do Brahmanad. Om. Om. Shanti. 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 Swastha. Good morning, student. Today I will discuss about a new chapter. The name of the chapter is Classification of Elements and Periodicity in Properties. At first I will discuss about the classification of elements. लोअर क्लास रे तमे समस्ते पर्याय सारणी विषय रे भला भाबरे पाठ पढिथिबो। जेतेबेले पिले कम संख्यक एलिमेंट्स थिले सेतेबेले किछि प्रॉब्लम होनथिला, किंतु जेतेबेले अधिक रु अधिक एलिमेंट डिस्कवर हैला सेतेबेले प्रॉब्लम क्रिएट हैला। से एलिमेंट गुडा को माने रखिबा, से एलिमेंट गुडा को इंडिविजुअली तार प्रॉपर्टीज एनालिसिस करिबा, से एलिमेंट गुडाकर कंपाउंड विषय रे मन रखिबा, समस्त एलिमेंट गुडाकर विषय रे मन रखिबा वेरी डिफिकल्ट। तेणु क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आवश्यक पड़िला। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? द मेथड ऑफ अरेंजिंग सिमिलर एलिमेंट टुगेदर and separating them from dissimilar element is called classification of element. That means यार अर्थ हैला जो एलिमेंट मानकर सिमिलर प्रॉपर्टीज रोज से मानको गोटिए प्लेस से रखिबा, जो मानकर डिसिमिलर प्रॉपर्टीज रोज से मानको नै कि अन्य गोटे प्लेस रे रखिबा। The method of arranging similar element together and separating them from dissimilar element. Dissimilar element थारो से मानको अलगा करिबा आउ सिमिलर एलिमेंट गुडा को गोटिए स्थान रे टुगेदर करिबा, ताको हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कहिथौ। ए क्लासिफिकेशन एलिमेंट करिबारे बेनिफिट कोन? ए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करला परे हमें गुडाए बेनिफिट पाइथौ। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? फर्स्ट पॉइंट इज it arranges all the known element in an information array. In an information array. मन इच्छा बिले एलिमेंट गुडा को अरेंज कराई परिबनी, गोटे निर्दिष्ट वे रे ताको अरेंज करियो पड़ियो। आ से निर्दिष्ट अरेंजमेंट द्वारा तमे किछि इंफॉर्मेशन पाई परिबो। सेकंड सिग्निफिकेंस इज इट rationalizes the known chemical fact about the element. गोटे एलिमेंट रो केमिकल प्रॉपर्टी विषय रे जानिबा पई हेले हमको पीरियडिक क्लासिफिकेशन रो हेल्प दरकार पड़ी थाए, जोटे कि हमें पीरियडिक टेबल वेरे ताको हमें कंसीडर करि थाओ। से पीरियडिक टेबल रो हम गोटे एलिमेंट रो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब जानि पारि थाओ। तार केमिकल प्रॉपर्टी काहे कि सेमति हैला ताकू मध्ये हमें इजीली बुझेई परिथाओ। थर्ड सिग्निफिकेंस इज इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तमेने समझते सुनिथिबो मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल रे एलिमेंट गुडा को साधारणतः भावे को अनुसार सजेई कि थांती अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज अनुसार से मानकु सजा जायछि। तो ता द्वारा तमे जानि पारछो जे गोटे एटम रो एटॉमिक नंबर केते हिथिबो, से को प्लेस रे रहिथिबो। यदि तमे पिले एटॉमिक नंबर जानि पारछो ताहले तमे एटॉमिक नंबर द्वारा तमे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानि परिबो। आमे जानि छे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानि पारछो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आराम से जानि परिबो। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानि पारछो ताहले से इलेक्ट्रॉन गुडा को सेल रे केमति अछिन ताहा भी जानि परिबा। तेणु इनडायरेक्टली पीरियडिक टेबल द्वारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट द्वारा आमे गोटे एलिमेंट रो बा गोटे एटम रो आमे स्ट्रक्चर भला भाबरे डिस्क्राइब करि पाछे।
स्पेसिफिकली आमे जनरली इलेक्ट्रॉन विषय भल भाव में कहि पारछे से आटम रे केतोटी इलेक्ट्रॉन थिबो आउ सेही इलेक्ट्रॉन गुडा को सेल रे केमती थिबो ता आराम रे जानि पारछे नेक्स्ट पॉइंट हैला इट predicts the order of chemical reactivity and many other properties of known element arranged in vertical column and horizontal rows ये जो पीरियडिक टेबल द्वारा ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट द्वारा आमे गोटे एलिमेंट रो कोन केमिकल प्रॉपर्टी हबो किछि प्रेडिक्शन करि पारुछे कारण जण को कंपेयर करी अन्य जणर केमिकल प्रॉपर्टी कहबाटा बहुत इजी किंतु किछि न जानी गोटे एलिमेंट रो केमिकल प्रॉपर्टी कहबा वेरी डिफिकल्ट यदि आमे पीरियडिक टेबल को देखिबा ताले पीरियडिक टेबल रे गोटे निर्दिष्ट वे रे केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट मानकर चेंज होइथाय गोटे निर्दिष्ट वे रे से मानकर फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये चेंज होइथाय तो सेही अनुसार आमे गोटे एलिमेंट को अन्य एलिमेंट से कंपैरिजन करी तार केमिकल प्रॉपर्टी विषय किछि प्रेडिक्शन करिथाउ There are many significance of classification of element किंतु फाइनली आमे गोटे जिंस कहि परिबा by the help of classification of element we can able to describe some points regarding about an element. There are many periodic tables developed by many scientists to explain the classification of elements. At first I want to explain the Duvenier triads. First periodic table is Duvenier triads. Look at that. This is said to be Duvenier triads. ये जो Duvenier triads रे किछि एलिमेंट को अरेंज कराइछि मन इच्छा पिले अरेंज कराइछि से मानकर किछि प्रॉपर्टीज अनुसार अरेंज कराइछि एटा होई Duvenier triads. नेक्स्ट पिले पीरियडिक टेबल होची डी चान कोटियोसिस क्लासिफिकेशन ये होची पिले डी चांस कोटियस क्लासिफिकेशन एठारे देखो एलिमेंट गुडा निर्दिष्ट वे रे अरेंज कराइछि नेक्स्ट पीरियडिक टेबल हैला जॉन न्यूलैंड लॉ ऑक्टावस यूज पिले जॉन न्यूलैंड ऑक्टावस एठारे एलिमेंट गुडा को सारेगामा पाधानिसा अनुसार सजा जाईची एक्चुअली ए सब पीरियडिक टेबल विषय रे आमे डिटेल्स पढिबा नै कारण हमर कोर्स ऑफ स्टडी रे एगुडा नै जस्ट खाली फंडामेंटल कांसेप्ट क्लियर करिया पे एगुडा तुमको शो करूची बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स ऑफ स्टडी. नेक्स्ट इज लोथर मेयर्स अरेंजमेंट. लुक एट दैट दिस इज सेड टू बी लोथर मेयर्स अरेंजमेंट. एठारे भी किछि एलिमेंट को अरेंज कराइछि गोटे निर्दिष्ट वे गोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अनुसार सजाइछि एटॉमिक वॉल्यूम को एटॉमिक मास अनुसार सजाइछि ये भी हमर कोर्स ऑफ स्टडी नाही जस्ट हमें खाली किछि फंडामेंटल आईडिया आनिबा पई एगुडा हमें पढुछे. नेक्स्ट होछि हमर मेंडलिव्स पीरियडिक टेबल. Next is your modern periodic table. There are different types of periodic table are given by different scientists. Among these periodic table, generally I will discuss about the modern periodic table according to our course of study. There are some importance of Mendeleev periodic table. This is your said to be Mendeleev periodic table. In this table, there are 8 columns are present. Look at that. 1, 2,
6, 7, 8. These columns are called group. There are 6 rows are present. These rows are called period. Look at that. This is the first row, that is called first period. This is your second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period. In this period table there are 8 groups and 6 periods are present. A period table ର କିଛି merits ଅଛି, କିଛି demerits ଅଛି बिले. According to our course of study, it is not necessary to explain something about Mendeleev periodic table. Very highly important periodic table for us, your modern periodic table. Next, I will discuss about the modern periodic table. Modern periodic table विषय में details पढ़िया. This is your modern periodic table. This periodic table based upon modern periodic law. Then what is a modern periodic law? According to this law, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. This implies that the elements are arranged in the increasing order of their atomic number. Look at that. The atomic number of hydrogen is 1. The atomic number of helium is 2. Next, the atomic number of lithium is 3. Next, beryllium having atomic number 4. Like that, you can also think about the other elements: boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. These elements are arranged according to the increasing order of their atomic number. ये जो एलिमेंट गुड़ाक ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल रे सजा है को अनुसार ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक लॉ. द पीरियडिक टेबल, दैट मीन्स द मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैव 7 horizontal rows and 18 columns. The 7 horizontal rows are called periods, while the vertical columns are called groups. Let me explain about the periods. The horizontal rows are called periods. In modern periodic table, there are 7 horizontal rows. Therefore, there are 7 periods. These periods are named as first period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, seventh period. Look at that. This is your first period, this is your second period, this is your third period, this is your fourth period, this is your fifth period, this is your sixth period, this is your seventh period. Below this modern periodic table, other 2 short periods are present. This period is called lanthanide series and this period is called actinide series. Let me explain the periods in details.
The first period contains two elements. One is your hydrogen, another is your helium. And this period is called the shortest period because it contains only two elements. The second period contains 8 elements, starts from lithium to neon. The elements are lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Next, the third period also contains 8 elements, starts from sodium to argon. The elements are sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon. The fourth period contains 18 elements, starts from potassium to krypton. The fifth period contains also 18 elements, starts from rubidium to xenon. The sixth period contains 32 elements, start from cesium to radon. Look at that. These 14 elements are also included in the sixth period. ये जो 14 एलिमेंट ये जो ब्लॉक रे अछंती ए ब्लॉक रे सफिशिएंट जगह माने स्पेस न हवा जो एठारे गोटे एक्स्ट्रा शॉर्ट पीरियड रूपे लिखा है किंतु ये जो 14 एलिमेंट ए ब्लॉक रे प्रेजेंट आंगर पीरियड कहले 6th पीरियड को बुझेबो 6th period is called the longest period because it contains maximum element. It contains 32 elements. Like 6th period, the 7th period also contains 32 elements. 6th period भलिया 7th period रे मध्य 32 element अछंती किंतु ए जो एलिमेंट गुडा को अछंती एगुडा को ऑफिशियली कंफर्म करा जाय नहीं तेणु आमे 6th पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड बोली कहिथाउ तळे जो एक्टिनाइड सीरीज अछि सेही सीरीज रे थिबा एलिमेंट मध्य 7th पीरियड सहित इंक्लूडेड एठारे सफिशिएंट स्पेस न होवा जोगु एई पीरियड रे थिबा एलिमेंट को एक्स्ट्रा गोटे शॉर्ट पीरियड करी तळे लिखा हैछि The 7th period starts from francium to Og. This is all about your periods of modern periodic tables. Let me explain about the groups. There are 18 vertical columns are present. These vertical columns are called groups. According to the old IPAC recommendation, there are 16 groups are present. The groups are IA, AA, IA, AA. Next is your triple IB, IVB. Next is your VB. Next is your VIB. Next is your VIIB. Next is V triple I. Next is IB. Next is double IB. Next is triple IA. Next is IVA. Next is VA. Next is your VIA. Next is your V double IA. Next is your zero group. Look at that. There are 18 columns are present, but there are 16 groups are present according to the old IPAC recommendation. Look at that. In this case, there are 3 columns are present, and the 3 columns are named as B triple I group. तार अर्थ एटारे 3टा कॉलम को गोटी ग्रुप बोली कहै छै
अन्य केस रे प्रत्येक कॉलम को गोटे गोटे ग्रुप बोली कंसीडर करा जायछि। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? But according to the new IPAC recommendation, each column is represented as a group. किंतु नुआ IPAC recommendation अनुसार प्रत्येक कॉलम को गोटे गोटे ग्रुप बोली कंसीडर करा होछि। ये जो फर्स्ट कॉलम को हमें न्यू रिकमेंडेशन अनुसार फर्स्ट ग्रुप कहबा, एटा को सेकंड ग्रुप कहबा, एटा थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एमती प्रत्येक कॉलम को गोटे गोटे ग्रुप बोली कुआ जाउछि। दिस इज योर अकॉर्डिंग टू द न्यू IPAC recommendation. Then tell me what is the difference between old IPAC recommendation and new IPAC recommendation? ओल्ड अनुसार 8, 9, 10th ग्रुप को आमे भी ट्रिपल आई कहवा, किंतु न्यू अनुसार 8 कॉलम को 8th ग्रुप कहवा, 9 कॉलम को 9th ग्रुप कहवा, 10th कॉलम को 10th ग्रुप कहवा। माने ओल्ड रे 8, 9, 10th ग्रुप मिसेकी भी ट्रिपल आई ग्रुप बोली कहा जाउछि। Look at the first group. A first group रे कौन कौन एलिमेंट अछंदी? The elements are hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ये जो एलिमेंट गुडा को हमें ग्रुप 1 रो बोली कहथाओ बा ताको IA ग्रुप कहा जायथाय। IA ग्रुप रे कौन कौन एलिमेंट अछि? हमरा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन व्यतीत अन्य समस्त एलिमेंट को हमें अल्काली मेटल बोली कहथाओ। Then what are the alkali metals? The alkali metals are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ग्रुप IA बादगा में फर्स्ट ग्रुप बोली कहथाओ। ए फर्स्ट ग्रुप रो एलिमेंट गुडा को हमें S ब्लॉक एलिमेंट बोली कहथाओ। आगो हम पाठ पढिबा व्हाट इज S ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज P ब्लॉक एलिमेंट, व्हाट इज D ब्लॉक एलिमेंट एंड व्हाट इज F ब्लॉक एलिमेंट। Look at the second group. In the second group the elements present are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. These elements are called alkaline earth metal. The alkaline earth metal are beryllium, magnesium, next is your what? Calcium, next is your strontium, barium, radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, next is radium. These elements are called alkaline earth metal. These elements are also belongs to S block element. In the modern periodic table, the S block elements are present in generally group 1 and group 2. Also, helium is also belongs to S block element. The element present in group 3 to 12 are called D block elements, and these elements are also called transition element. हमें P ग्रुप रो आरंभ करी 12 ग्रुप रे थिबा समस्त एलिमेंट को हमें D ब्लॉक एलिमेंट बोली कहथाओ। आ ए D ब्लॉक एलिमेंट को हमें ट्रांजिशन एलिमेंट मध्य कहथाओ। ग्रुप 15 रो अन्य नाम गोटे अछि। ग्रुप 15 रो अन्य नाम हला पिकोजेन। ग्रुप 16 को हमें चाल्कोजेन बोली कहथाओ।
ग्रुप 17 एलिमेंट को आमे हालोजेन बोली कहि थाओ ग्रुप 18 एलिमेंट्स गुडा को आमे नोबल गैस एलिमेंट्स बोली कहि थाओ नाले आको रेयर गैस बोली कहि थाओ इट हैव आल्सो अदर नेम दैट इज योर इनर्ट गैस and it have also other name that is your erogen. Group 15 को हमें कही था पिकोजेन ग्रुप 16 को हमें कही था चाल्कोजेन ग्रुप 17 को हमें कही था हालोजेन ग्रुप 18 रो अनेक नेम अछि जोटा कि हमें कहबा जीरो गैस कहि परिबा नाले लगा हमें एरोजेंस कहि परिबा नाले लगा हमें नोबल गैस कहि परिबा नेक्स्ट अदर नेम मध्ये अछि इनर्ट गैस नेक्स्ट इट हैव आल्सो अदर नेम दैट इज रेयर गैस ग्रुप 13 रो ग्रुप 18 भितर दिबा समस्त एलिमेंट को हमें p ब्लॉक एलिमेंट कहिताओ किंतु रिमेंबर हीलियम डू नॉट बिलोंग्स टू द p ब्लॉक एलिमेंट्स इट बिलोंग्स टू विथ s ब्लॉक एलिमेंट्स हम कोन लिख परिबा ग्रुप 13 to group 18 elements are called p block elements. You remember except helium व्यतीत group 13 रो group 18 रो समस्त एलिमेंट में p block elements बोली कहिताओ तळे जो दुईटी शॉर्टेस्ट पीरियड अछंदी सेमानक हमें f block elements बोली कहिताओ आउ A block element रो अन्य नाम गोटे अछि दा नाम अछि inner transition element. The F block elements are also called inner transition element. Group 1, group 2, group 13, 14, 15, 16, 17, 18 these elements are called representative elements. Next I will explain about the classification of elements into different blocks. The modern periodic table is classified into 4 different types block such as number 1 is your S block, number 2 is P block, number 3 is D block, number 4 is F block. Look at that. The group 1 and group 2 elements along with helium are called S block elements. On the other hand, except helium, the element present in group 13 to 18 are called P block element. Similarly, the element present in group 3 to 12, these elements are called D block elements, and the element present in the lanthanide series and actinide series, that means these elements are called F block elements. How can we decide which element present in which block? This can be clearly explained by the help of electronic configuration of that element. Suppose I want to know about the block of sodium. It can be explained by the help of electronic configuration of sodium. The atomic number of sodium is 11. The electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. From the electronic configuration of sodium, it is clear that the last electron of sodium goes to the S subcell. That's why sodium atom belongs to S block. एठारु जणागला जे गोटे एलिमेंट रो लास्ट इलेक्ट्रॉन जेउ सबसेल को जीवो से अनुसार आमे तार ब्लॉक डिसाइड करिबा. एठार देखो सोडियम रो लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबसेल को गला बोली सोडियम S ब्लॉक रो बोली कहबा. Similarly, think about the element carbon.
carbon belongs to which block? This can be clearly explained by drawing the electronic configuration of carbon. The atomic number of carbon is 6. The electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2. The last electron of carbon goes to the p subshell. That's why carbon belongs to p block. Similarly, think about the element scandium. The atomic number of scandium is 21. The electronic configuration of scandium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. The last electron of scandium goes to the d subshell. So, scandium belongs to B block. Similarly, think about the cerium. Cerium having electronic configuration 6s2, 5d, 10, 4f2. ए 6s पूर्वर मध्ये आवरी गुडाय ऑर्बिटल अछि जेहेतु लंबा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हबो तेनु मु लास्ट आडू तीनोटी सबसेल रो विषय रे लिखि देली. From this electronic configuration of cerium, it is clear that the last electron of cerium goes to F subshell. That's why cerium belongs to F block. Look at that. In case of sodium, the S subshell belongs to the valency cell. On the other hand, in case of carbon, the p subshell also belongs to valency cell. But if you think about the element scandium, in case of scandium, the d subshell does not belong to the valency cell. It belongs to the penultimate cell. Similarly, in case of cerium, the F subshell do not belong to the valency cell. It belongs to the anti-penultimate cell. Then tell me what is the meaning of penultimate cell and anti-penultimate cell? मने रखो पहले valency cell रो पूर्व सेल को हमें पेनुल्टिमेट सेल बोली कहि थाओ. पेनुल्टिमेट सेल रो पूर्व सेल को हमें एंटी पेनुल्टिमेट सेल बोली कहि थाओ. फॉर एग्जांपल हमें नबा सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, दिस इज योर ए सेल, दिस इज योर एल सेल, दिस इज योर एम सेल, दिस इज योर एन सेल. हमें यदि स्कैंडियम कथा कहबा, स्कैंडियम केस रे लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d subshell को जाउची, किंतु 3d subshell belongs to the m cell. Look at the electronic configuration of scandium. Here also 4s subshell is present and the 4s subshell belongs to the n cell. From this it is clear that the valency cell of scandium is n. But the last electron goes to the subshell of M. Now look at that. This is your valency cell. This is your penultimate cell. And this is your said to be anti-penultimate cell. In this diagram, N cell is the valency cell, M cell is the penultimate cell, L cell is the anti-penultimate cell. Similarly, think that here 6s belongs to valency cell, 5d belongs to penultimate cell, but 4a belongs to anti-penultimate cell. From this example,
it is clear that in case of S block element, the last electron of the element present in the S block goes to the S subcell of the valency cell. On the other hand, in case of P block elements, the last electron of the element present in the P block goes to the P subcell of the valency cell. But if you will think about the D block element and F block element, in case of D block element, the last electron of the elements present in the D block goes to the D subcell of penultimate cell. On the other hand, in case of F block element, the last electron of elements present in the F block goes to the F subcell of anti-penultimate cell. Then tell me, what is a S block element? The element in which the last electron enters the S subcell of the outermost cell are called S block elements. On the other hand, what is the P block elements? The elements in which the last electron enters the P subcell of the outermost cell, that is your valency cell, are called P block elements. Similarly, what is the D block element? The element in which the last electrons enter the D subcell of the penultimate cell are called D block elements. Similarly, what is a F block element? The element in which the last electron enters the F subcell of the anti-penultimate cell are called F block elements. Let me explain about the S block elements in details. The elements in which the last electron enters the S subcell of the outermost cell are called S block elements. The elements of Ia and AA group and helium are called S block elements. Except hydrogen, the elements present in Ia group are called alkali metal. On the other hand, the element present in AA group are called alkaline earth metal. The element present in Ia groups are hydrogen, next is your lithium, next is your sodium, potassium, rubidium, next is your cesium. Suppose I want to draw the electronic configuration of hydrogen, then the electronic configuration is your 1s1. Suppose I want to draw the electronic configuration of lithium, then the electronic configuration is your 1s2 2s1. Next I want to draw the electronic configuration of sodium, then the electronic configuration of sodium is 1s2 2s2 2p6 3s1. देखो पिले हाइड्रोजन रे 1s1 हला, लिथियम रे 2s1 हला, सोडियम रे 3s1 हला, पोटेशियम रे ऑब्वियसली कौन हबो 4s1, रुबिडियम रे ऑब्वियसली कौन हबो 5s1, सीजियम रे ऑब्वियसली कौन हबो 6s1, फ्रांसियम रे ऑब्वियसली कौन हबो 7s1. From these electronic configuration, it is clear that the general electronic configuration
configuration of outermost cell of IA group is what? NS1. एठारे n is equal to कौन मिले? n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. यदि n is equal to 1 पुट करिवो ताले हाइड्रोजन कथा हबियो. if n is equal to 2 ताले लिथियम कथा हबियो. if n is equal to 3 ताले सोडियम कथा तमे भाबियो. सिमिलरली तमे n is equal to 4 पकेले कोन आसियो? 4s1 आसियो. n is equal to 5 पकेले कोन आसियो? बेले 5s1. n is equal to 6 पकेवा ताले कोन आसियो? 6s1. n is equal to 7 पुट करिवो ताले कोन आसियो? 7s1. जेमिति बिले आमे IA ग्रुप पाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन ऑफ आउटर मोस्ट सेल बाहर करले सेही परि केले आमे डबल IA ग्रुप माने सेकंड ग्रुप पाई यदि आमे बाहर करिया चाहिबा ताल कोन बाहरियो बोले NS2. हीलियम पाई मध्य बिले बाहरियो हीलियम सहित डबल IA ग्रुप रे थिबा एलिमेंट मानक पाई कोन बाहरियो NS2. यदि आमे IA एवं डबल IA आ हीलियम तीनटा को मिसे की कहबा ताले ए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन ऑफ आउटर मोस्ट सेल कोन होबले NS122. NS1 हला IA ग्रुप पाई NS2 टा हला डबल IA सहित हीलियम पाई. ये होज बिले तमरो ग्रुप 1 रे थिबा एलिमेंट ग्रुप 2 रे थिबा एलिमेंट आ हीलियम एलिमेंट को आमे s ब्लॉक एलिमेंट बोली कहताओ. आको आमे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मध्य कहताओ. फाइनली आमे लिखि परिबा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration of outermost cell of s block element is NS122. Next I want to explain about the characteristics of s block elements. What are the characteristics of s block elements? S block elements are soft metal with a low melting and boiling point. S block elements have low ionization energy. S block elements are highly electropositive. S block elements act as a strong reducing agent. S block elements are good conductor of heat and electricity. S block elements are very reactive metals. Most of the S block element impart characteristic color to the flame. Except helium, they mostly form ionic compound. These are some characteristics of S block elements. Next I will explain about the P block elements. The elements in which last electrons enters the P subshell of their outermost cell are called P block element. आमे जेमती S block element मानक पई गोटे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन ऑफ आउटरमोस्ट सेल पई बाहर कले से भले आमे P block रो एलिमेंट पई मध्ये गोटे जनरल फार्मूला बाहर करि परिबा. तेना आमे लिखि परिबा द जनरल इलेक्ट्रॉनिक configuration
of outermost cell of p block element is n/2 np1 to 6. This is the general electronic configuration of outermost cell of p block elements. Except helium, the elements of group 13 to group 18 are called p block elements. P block elements are also called representative element. Next I will explain about the characteristics of p block elements. In p block elements, metal, metalloid, non-metals all are present, but the number of metal is more than from both metal and metalloid. The metalloid present in between the metal and non-metal. The p block elements have quite high ionization energy and the value tend to increase from left to right in the periodic table. They form mostly covalent compound. The reducing character of p block element increases from top to bottom in a group and oxidizing character increases from left to right along a period. This is all about the characteristics of p block elements. Next I will explain about the d block elements. The elements in which last electron enters into the d subcell of penultimate main energy level are called d block element. The general outermost cell electronic configuration of d block element is n-1d 1 to 10 ns 0 to 2. This is the general outermost cell electronic configuration of d block elements. The elements present in group 3 to group 12 are called d block elements. The d block elements are also called transition element. The d block elements are again classified into 4 series. Number 1 is your first transition series. Number 2 is second transition series. Number 3 is third transition series. Number 4 is fourth transition series. Look at that. Group number 13 to group number 12. ए एलिमेंट गुड़ा आमे डी ब्लॉक एलिमेंट बोली कहि थाओ. ए जो डी ब्लॉक एलिमेंट को चारोटी सीरीज रे डिवाइड कर दिया जायछि. एटा होछि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एटा होछि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, एटा होछि नर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, एटा होछि नर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ पीरियड सहित लिंक रखिछि. सेकंड ट्रांजिशन सीरीज belongs to fifth period. Third transition series belongs to sixth period. Fourth transition series belongs to seventh period. First transition series रे कौन कौन एलिमेंट अछंती स्कैंडियम ठार आरंभ करी जिंक पर्यंत. ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रे जो एलिमेंट माने अछंती सेमानकर लास्ट इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे 3D सबसेल रे फिलअप होई जाई थाए. तेणु फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट को आमे 3D ट्रांजिशन सीरीज मध्य कहि परिबा. सिमिलरली बिले सेकंड ट्रांजिशन
सीरीज को आमे 4D ट्रांजिशन सीरीज कहि परिबा कारण एठारे थिबा एलिमेंट मानकर लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल रे धीरे धीरे फिलअप होई थाए। सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट गुडा को हमर कोठा आरंभ होई थाए यूट्रियम ठार आरंभ करी कैडमियम पर्यंत जाई थाए। थर्ड ट्रांजिशन रे हमर कोमाने रहबे लैंथानम तापर हापानियम ठार आरंभ करी Hg जाय रहबो। एठारे थिबा एलिमेंट मानकर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमर 5D रे सरी थाए माने 5D सबसेल धीरे धीरे फिलअप होई थाए। तेणु थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को हम मध्य 5D ट्रांजिशन सीरीज कहि परिबा। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज रे को एलिमेंट मान अछंती एक्टिनियम नेक्स्ट ला रदरफोर्डियम ठार आरंभ करी Cn पर्यंत अछंती। एठारे थिबा एलिमेंट मानकर मध्य लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D सबसेल रे धीरे धीरे फिलअप हेतिबा जोगो ए जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को हमें 6D सीरीज मध्य कहि परिबा। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट द characteristics of d block element. D block element can able to form the colored compounds. D block element exhibit variable oxidation state. D block element can form complex compounds due to absence of vacant d orbital. D block elements are metal and have high melting and boiling point. These are the characteristics of D block elements. Next I will explain about the F block elements. The elements in which the last electrons enter into the F subshell of anti-penultimate main energy level are called F block element. The general outermost electronic configuration of F block element is NH2 N-1 D 0 or 1 N-2 F1 to 14. This is the general outermost electronic configuration of F block element. The F block elements are also called inner transition elements. The F block consists of two series of elements. One is a lanthanide series. It is also called lanthanoid series. Second is a actinide series. It is also called actinoids. This is the first inner transition element. This is the second inner transition element series. The first series consists of element lanthanum and from cerium to lutetium, and this series is called lanthanide because this series starts with the element lanthanum. इस सीरीज ना lanthanide इतने दिए कारण ये lanthanum रो आरंभ होइछ बेली. Similarly, the second series consists of the element actinum and from thorium to Lr. This series is called actinide series because this series starts from actinum. इस सीरीज ना actinides कहैछि कारण ए सीरीज टी actinum रो आरंभ होइछि. Each series contain 14 elements. First series 14 element को नै तयारी हेछि. Second series मध्य 14 element को नै तयारी हेछि. The lanthanide elements are also called rare earth elements. Next I want to explain about the characteristics of F block element. All the F block elements are heavy metal. All the F block elements have a tendency to form complex
The element present in the F block shows variable oxidation state. The F block elements have high melting and boiling point. These are the characteristics of F block elements. Finally, this is all about the classification of elements into different blocks. Thank you. Have a nice day.